Good evening class. In last video we have discussed the floral diagram and we have discussed the lots of parts of flowers like we have discussed calyx, corolla, androecium and gynoeciums. Okay, so these are the very important topic. Which parts of flower generally called as calyx, which part of flower called as corolla, and which parts is also considered as sepals and petals. Okay, so there is too much difference between sepals and petals, calyx and corolla. So we have discussed in last class, and now today we are going to discuss the most important topic of the placentations and estivation of flowering plants. Okay, so these are the very important topic. Why? Because these two topics carry lots of marks and the board exams also, because this is the very important part in which flowering plants is totally based. Okay, so first point we are going to discuss, and that is called estivation. Okay, so what is the meaning of estivation? Estivation means the proper arrangement of sepals and petals. Okay, sepals we have discussed and petals we have also discussed. Petals means they are the leaves. Okay, so flowers में जो generally जो structures होते थे petals, पत्तियां जिसको हम कहते थे generally, these are the very color like structures, and that's why most of the pollinators are generally attract to them. So sepals and petals in a small bird, जो भी छोटे से bird होते हैं वहां से जो भी हमारा सेपल्स और उसके बाद हमारा जो पेटल्स निकलता है, दैट इज कॉल्ड द एस्टिवेशन. Okay, this is the very important and most important topic for exam purpose. So estivation means there is a proper arrangement of sepals and petals in a flower bird. यानी flower bird के ऊपर जो arrangement होता है sepals और petals का, that is called estivation. Okay, so most important, estivation is generally four types. Estivation के four types हैं. First estivation is velvet estivation, ठीक है. Second estivation is twisted estivation. Third imbricate, and fourth is vexillary. So velvet estivation is एग्जाम्पल देखेंगे तो कैलोट्रोपिस. व्हाट इज द वेलवेट एक्सटिवेशन? वेलवेट एक्सटिवेशन का मतलब जो अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का, दे आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑफ ओवरलैपिंग मैनर. ये ओवरलैपिंग नहीं होते. सपोज वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक दिस, देयर इज अ नॉट ओवरलैपिंग. सो इज इन दिस the arrangement of sepals and petals, it not in a proper overlapping, एक दूसरे की overlapping नहीं होते हैं. And secondary thing is that they also do not touch to each other. ये आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं. So that is called velvet estivation. इसे हम velvet estivations कहते हैं. Okay, next. Now second is twisted estivation. What is the meaning of twisted estivation? Twisted estivation means there is a little bit of overlapping pattern in which one is inside and second is outside. Same, one is inside and second is outside. So these types of arrangements are called velvet estivation. It means that one of them is inside and second is outside. तो इनमें ऐसा होता क्या है? There is a small little bit pattern of overlapping. It means one petals and one sepals is inside and one of them is outside. That is called twisted. यानी twisted form में होते हैं, एक अंदर एक बाहर. Now next we are going to discuss that imbricate. Imbricate estivation is generally comes in the class of cassia plant, and in this the arrangement is one petals is totally outside and one is totally inside. So these types of arrangement are called generally imbricate. Imbricate means one of the sepals and petals are generally outside, completely outside. There is a not overlapping, completely outside, and one is completely inside. That is called imbricate estivation. Okay, and last is vexillary estivation. What is the meaning of vexillary estivation? So vexillary estivation is totally depend on three patterns. The first one is posterior stranded, second lateral, and third is keel pattern. Okay, so इनमें जो estivations होते हैं like this, ये इनके estivation से second और ये इनके third estivation. So there is a pattern of this types of estivation. First जो होता है सबसे primary, that is called posterior standard, second lateral, and third is keel standard. Keel standard means सबसे lower basal portion is called keel standard. So these are the estivation, generally four types: velvet, twisted, imbricate, and vexillary. Most of the times these questions may be asked in your exam, so you have to prepare very well. After that we are going to discuss that placentation. What is the meaning of placentation in flowers? So placentation in plants,
the arrangement of ovules, the arrangement of ovules inside the ovary is called placentation. यानी जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर, the arrangement of ovules inside the ovary is called placentation. Generally it is 5 types. अगर हम बात करें तो ये 5 types के होते हैं. The first one is marginal, axial, parietal, free central and basal. Okay, so estivation is generally 4 types but placentation is generally 5 types. Most important अगर हम बात करते हैं, the first one is marginal presentation. What is the meaning of marginal presentation? So in this, the arrangement of ovules is generally attached with the like this. Suppose we are taking examples of this is the plants of pea. In this, there is the arrangement of that type of structures are generally seen. This is the arrangement of ovules within the ovary. Most important for PMT and NEET exams, most of the time these are the futures. Ovary is the future fruit and this is ovules is the future seed. Okay, so most important point you have to write down in your fair copy. Ovules is the future seed and ovary is the future fruit. Okay, so in this ovules is also fit in pea plant in a rib-like structures and that is also called ventral structures and that is also attached in a marginal portion. That's why they are called as marginal presentation. Marginal presentation means in this ovules are generally ovules we have studied the seeds in which ovules are generally seated in the marginal axis of plant that is called marginal presentation. Okay, now next is exile presentation. Exile presentation what is generally came from the axis. Axis means we have discussed in tomato and lemon. Suppose this is the example of tomato. In this there is a 3 types of structures are there and in this the ovules are generally fitted. So these are the exile means if you cut from the that part it means tomato will be divided into 2 equal parts. First is right, second is left. So exile presentation means these are totally based on the axis pattern whether it is tomato and lemon and the seeds are generally found inside of that portion. Okay, so that is called the exile presentation means that is totally based on the axis pattern. Okay, next Parental we have seen in mustard and muskmelon. In this there is a slightly difference between tomato and lemon. So what is the difference between that? In tomato the ovules are generally separated from in tomato the ovules are generally separated from 3 parts but in parental mustard and muskmelon the ovules are not separated, they are conjugated in the center portion. Okay, so these are the arrangement of ovules inside the ovary is called parental presentation. Is it clear? So most important there is a too much difference between exile and parental. Now we are going to discuss that free central. What is the meaning of free central? So free central means the most important point the ovules are arranged in the central portions without any attachment. So these are called as free central. Example की बात करते हैं तो dianthus most common and last is basal presentation. Okay, so basal presentation means suppose we are going to take an example of sunflower or marigold. In this the arrangement of ovules are generally found inside the ovary. यहाँ पे generally पाया जाता है that is called basal. Okay, basal presentation means in this the ovules are generally found inside the ovary in just a basal portion like we have seen in sunflower and हमने marigold में भी देखा जब ऊपर के flowers को जब हम remove करते हैं तो उसके last में एक whitish टाइप का एक structure दिखाई देता है that is called the basal presentation. वो उसका basal presentation होता है जो कि sunflower और ovules में होता है. जब पूरे येलो कलर के जो फ्लावर्स को आप जब रिमूव करेंगे तो आपको सबसे लास्ट में व्हाइट कलर का फ्लावर्स व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा दैट इज कॉल्ड द पैटर्न्स ऑफ ओवरी अरेंजमेंट इन ओव्यूल्स. ओके, उसमें आपको ओव्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एस्टिवेशन एंड प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट मूव टू द पॉइंट ऑफ फ्रूट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूट? सो
We know that fruit is the characteristic features of flowering plants. Fruit जो होते हैं किसी भी plant के characteristics features होते हैं, and it is a very important things. Why? Because it is matured ovary. Fruits is also called matured ovary. As I told you that this is the future fruit and this is the future seed. It means ovules turn around the seed and ovary in future turn around in fruits. एंड ठीक है, सो मैच्योर्ड ओवरी होते हैं एंड डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो फ्रूट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बस देयर इज अ एक्सेप्शन आल्सो. सम ऑफ द फ्रूट्स आर जनरली डेवलप्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन. These fruits are called parthenocarpy fruit. Okay, some of the fruits are generally takes part in the fruit formation without fertilization. These are called parthenocarpy fruit. ऐसे कुछ fruits होते हैं जो बिना fertilization के ही formed हो जाते हैं. That is called parthenocarpy fruit. Okay, so you have to give me two examples in my WhatsApp. What is the name of any two plants and two fruits of parthenocarpy? दो parthenocarpy fruits के नाम आपको मुझे बताना है, ठीक है. So after that we are going to discuss fruits की बात करते हैं. तो fruits के generally layers होते हैं. So fruits में भी considered as different types of layer. The first one is, अगर हम first की बात करते हैं तो pericarp. Pericarp is a flesh and juicy layers जो fresh होते हैं. फ्लैश मीन्स जो थोड़े से, जैसे हम मैंगो वगैरह जनरली खाते हैं. जूसी लेयर्स होते हैं एंड मे बी ड्राई. या तो फ्लैश होंगे, फ्लैशी सपोज, ओके, नॉट फ्लैश, फ्लैशी एंड जूसी लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, पेरिकार्प मीन्स द फ्लैशी एंड जूसी लेयर्स आर मे बी ड्राई. या तो फ्लैशी होंगे, ठीक है, या तो जूसी होंगे और या फिर ड्राई होंगे. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ द फंक्शंस आर अप्रॉक्सिम. देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस, ठीक है. या तो ये सूखे होंगे या तो वो फ्लैशी होंगे या तो जूसी होंगे. सो अगर हम बात करें पेरिकार्प की, सो देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ पेरिकार्प्स. डिवीजन, उनके डिफरेंशिएशन पेरिकार्प के वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड. द फर्स्ट वन इज एपिकार्प एंड दिस इज द outer layer of any fruits, and mesocarp the central layer of any fruit, and endocarp the inside layer of any fruit. एंड एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज मैंगो, ठीक है. सपोज हम एक मैंगो को ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सो मैंगो की अगर हम बात करते हैं तो इनसाइड देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एपिकार्प. ये स्ट्रक्चर एपिकार्प होगा. जो हम लोग सेंट्रल पार्ट इसका जो खाते हैं दैट इज कॉल्ड मेसोकार्प. एपिकार्प को जनरली हम पील आउट करके उसे छोड़ देते हैं. मेसोकार्प जो फ्लैशी जूस होते हैं जनरली मैंगो के, जो येलो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जनरली खाते हैं. एंड लास्ट पोर्शन इज देयर इज अ इनसाइड द हार्ड सीड्स दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प. एंडोकार्प इज आल्सो नॉट ईटन पार्ट. एंडोकार्प को भी जनरली हम लोग नहीं खाते हैं. सो एंडोकार्प इज अ हार्ड एंड इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट्स. मेसोकार्प इज अ मिडिल लेयर. Endocarp is the inside layer, yeah, it means inner layer, and epicarp means the outer layer of any fruit. That is all about the pericarp. Okay, so next we have to discuss some more properties of flowers and also their patterns. Okay, so this is your last part of the chapter 8, morphology of flowering plants. In this we are going to discuss some important family members of plants. Okay, so in your book there is a 3 family members are given and many more are also given in refresher. So you have to study only for that portion, because this is not a so much important topic and it is not a very beneficial part also, because in this there is only a description and importance are generally asked in the examination, not for all the floral diagrams and floral formulas are generally asked, because there is a lots of formulas and lots of floral diagram is also there. I will send you in a PDF and you have to read through it, but in this we will discuss only the extract portions of importance of this topic. Okay, so next we are going to discuss that the different family में अगर हम देखते हैं plants की, तो आपके बुक में 3 families दी हैं. पहला Fabaceae, second Solanaceae and third is Liliaceae. ठीक है. So there is a 3 different types of plants families are given in your book. So what is
Fabaceae. Fabaceae plants are generally leguminous plants. Leguminous plants means those plants which are very beneficial for providing lots of pulses, lots of oil material for our vegetable purpose and for our food purpose also. So these plants are called leguminous plants. Okay, so it is spread in all over the world. ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. और अगर हम बात करें फ्लोरल डायग्राम का इनका जनरली ये किसके ऊपर बेस्ड है. सो फ्लोरल डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है, सबसे पहला उनका होता है फ्लोरल कैरेक्टर्स. किस तरह के कैरेक्टर्स को वो पोजेस करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस आर जनरली फाउंड इन फेबिएसी ग्रुप. फेबिएसी प्लांट्स में होने वाले इनफ्लोरेसेंस में जनरली ये रेसिमोस के होते हैं. ठीक है. फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगोमॉर्फिक. कैलिक्स कैसा होता है, तो 5 सेपल्स के होते हैं. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. नाउ कोरोला कैसे होते हैं, 5 पेटल्स के होते हैं, मींस पॉलीपेटल्स. ठीक है. लास्ट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड पॉलीपेटल्स एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन. अब इनके कोरोला के भी पेटल होगा जिसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं. सो दीस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरल डायग्राम एंड ऑल द सेक्शन हैज डिफरेंट साइज. जैसे के अलग कैलिक्स के लिए होगा या कोरोला के लिए होगा. ठीक है. मेल के लिए अलग है एंड फीमेल के लिए अलग है. सो अलग अलग इनके नेचर्स हैं. इनमें सिंबल्स बहुत सारे दिए हुए हैं. किसके लिए कौन से सिंबल्स हैं, आई हैव अ PDF, I will send you after the completion of class. Then you have to learn it because this is not a very important topic to come in your exam purpose. So next, androecium, gynoecium, male part and female part is also considered in Fabaceae. ऐसे सारे floral characters जो हैं वो आपके Solanaceae में भी आएंगे and Liliaceae में आएंगे, but we will not study. ठीक है. We will study only the important parts of Solanaceae plants. में से कौन से plants आते हैं, उनका क्या economic importance है. Liliaceae में कौन से plants आते हैं, उनका क्या economic importance है. This is a just example of outcomes. और Fabaceae का भी हम देखेंगे. Fabaceae में सबसे important part क्या है. So These are the total arrangement of floral diagram. किसी भी floral diagram से पहले हमें उसका कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैसा प्लेसेंटेशन है, कैसा एस्टिवेशन है, सारी चीजें क्लियर होगी. उसके बाद हम 3 प्लांट्स का अलग अलग फॉर्मूले लिख सकते हैं. आपके बुक में फॉर्मूले भी दिए हैं और फॉर्मूले जनरली वी हैव टू लर्न ओनली. ठीक है. आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे. दैट इज नॉट एनी अल्टरनेटिव वे टू क्रिएट अ न्यू फॉर्मूला. ओके. नेक्स्ट फेबिएसी की बात करते हैं. सो मेनी प्लांट्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी आर फैमिली. बहुत सारे प्लांट्स इस फैमिली में बिलोंग करते हैं. दीज आर द सोर्सेस ऑफ पल्सेस, मींस दाल वगैरह जनरली जो हम यूज करते हैं, लाइक ग्राम, अरहर एंड सेम आल्सो, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक मूंग आल्सो. मूंग भी है. एंड सोयाबीन एंड ईटेबल ऑयल, इट इज आल्सो extracted and it is also comes in the family of Fabaceae. तो Fabaceae में ऐसे पौधे बिलोंग करते हैं. सोयाबीन एंड ग्राउंडनट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वेजिटेबल्स ऑयल. इट मींस दिस इज ऑल्सो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोयाबीन प्लांट्स जो हम ईटेबल ऑयल के फॉर्म में यूज करते हैं. ठीक है. सो दिस इज इनफ फॉर Fabaceae. नेक्स्ट फेज इज Solanaceae. What is the meaning of Solanaceae? Solanaceae is also a sources of food. Like which types of plants generally comes in this family? Like tomato plant, brinjal, पोटैटो. स्पाइसेस में जैसे चिली वगैरह हो गए. मेडिसिनल में बेलाडोना एंड अश्वगंधा. ठीक है. ये सारे जितने भी मेडिसिन के फॉर्म में होते हैं. अश्वगंधा जो है, और एक जनरली इसी के जैसे सबमेंटिया भी होते हैं जिसको जो जनरली मेडिसिनल यानी हाइपर ब्लड प्रेशर के लिए वगैरह भी यूज करते हैं. टोबैको एंड ऑर्नामेंट्स जो पेटूनिया प्लांट से जनरली एक्सट्रैक्ट करते हैं. ऑर्नामेंट्स का मतलब देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल थिंग्स कैन बी प्रिपेयर्ड लाइक ज्वेलरी, bracelet and different things can be obtained by these types of plants. Okay. Now the last topic is Liliaceae. What is the meaning of Liliaceae? Liliaceae means it is good for ornamental purpose. Most of the plants are generally comes as Liliaceae for ornamental also, because approx 70 to 8% plants are generally considered in ornamental purpose. Like बात करते हैं tulip, okay, gloriosa, and sources of medicines also like aloe. It is one of the plants is also considered in this family, which is generally used to extraction of different types of medicines. Okay, so I think this is enough for today class and this chapter is completed, and I am giving you one homework. You have to maintain daily notes and your fair copy, and you have to send me only 2 examples of which I asked in the video. Okay, till then, if you have any doubt regarding my topic, you can contact me next day.
we will start a new chapter also. Okay, thank you, students.